science teacher from St. Joseph Public School, Tom. So in previous video, we were discussing about adaptations of animals found in the polar regions. So in today's video, students, we are going to learn adaptations found in the animals which are living in the tropical rainforest. So पहले समझते हैं कि what is the tropical rainforest actually is. Tropical rainforest word हम किसके लिए use कर रहे हैं? In previous video, students, we discussed the different climatic zones on the earth. हमने ग्लोब के ऊपर, अर्थ के ऊपर different climatic zones को study किया था. In that diagram, we studied the imaginary line which is passing from the center of the earth, that is called as an equator. It divides the earth into two parts, which are northern hemisphere and southern hemisphere. The areas situated just nearby this equator just ऊपर के जो areas हैं और just नीचे वाले जो neighboring areas हैं, these areas are called as tropical areas. इस zone को हमने tropical zone कहा था. We also studied that the tropical zone is a zone on the earth where the temperature is extreme, बहुत high temperature रहता है, because sun की जो rays हैं they directly reach to this area, तक सीधी यहाँ पे पहुँचती हैं with high intensity, बहुत कम short time period के अंदर they can easily reach to the equator, इसलिए उनकी heat बहुत ज़्यादा होती है, तो this area is called as a tropical area. Now, because of the extreme heat in this area is having maximum rainfall also throughout the year. पूरे साल यहाँ पे heat बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वाटर का evaporation बहुत ज़्यादा होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे पूरे साल ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर हैवी रेनफॉल होता रहता है. दैट्स व्हाई दिस एरिया इज कॉल्ड एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. एक्चुअली दीज रेन फॉरेस्ट आर द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस ट्रॉपिकल एरिया. इस ट्रॉपिकल एरिया का एक स्पेसिफिक रीजन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. आप समझते हैं कि how we can define a tropical rainforest? We can define it in this way, that the area situated near the equator. हमने डायग्राम में फिर से समझा कि इक्वेटर के जस्ट पास का जो एरिया है, having hot and wet climate. हॉट होता है, बहुत ही ह्यूमिड होता है, वेट यहाँ का क्लाइमेट होता है. What the reason? Because of the humid and wet climate. इतना ह्यूमिड और वेट क्लाइमेट जो है यहाँ का. हॉट हमें समझ में आ रहा है बिकॉज इक्वेटर के पास का एरिया है और यहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली पहुंच रही है. दैट्स व्हाई दिस एरिया इज वेरी हॉट. ह्यूमिड एंड वेट किसकी वजह से है? ड्यू टू द रेन थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पे पूरे साल रेनफॉल होता रहता है. दैट्स व्हाई दिस एरिया इज हैविंग दी हॉट, ह्यूमिड एंड वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस. अगर बात करें अबाउट द टेम्परेचर ऑन दिस एरिया, इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया के अंदर टेम्परेचर कैसा रहता है? स्टूडेंट्स, इन एक्सट्रीम विंटर्स, बहुत सर्दियां होती हैं, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं. एट दैट टाइम आल्सो इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया टेम्परेचर डजंट फॉल बिलो 15 डिग्री सेल्सियस. बहुत ज़्यादा सर्दियों में भी टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है. एंड इन समर डेज द टेम्परेचर में रीच टू दी 40 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और विंटर्स में ये 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है. Let's talk about some other features of this area. Students, in the tropical rainforest area, the length of day and night that is almost equal. That means 12 hours का day होता है and 12 hours के लिए night होती है इस area के अंदर. If we talk that what are the locations on the globe, पूरे अर्थ में कौन से एरियाज हैं जो इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन के अंदर आते हैं? So these areas are the areas found in Western Ghats and Assam in India, then Southeast Asia, Central America and Central Africa. These are the areas which are found, these are the places which are found in the tropical rainforest area. Students, the climatic conditions of this tropical rainforest zone are highly suitable for the survival of most of the plant and animal species.
यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो इतनी फेवरेबल होती हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज मिलती हैं, maximum those species are found in this area. So it says that home to half the plant and animal species on earth. पूरी अर्थ पे जितने भी प्लांट और एनिमल स्पीशीज टोटल हैं, उनका ऑलमोस्ट 50% इज फाउंड इन दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया. नाउ जब इतने सारे यहाँ पे हमने बात की कि a lot of plants and animal species are found in this area. So because of wide variety of plants and animals, there is intense competition for the food and shelter. जब इतनी सारी species plants की और animals की एक ही place पे survive कर रहे हैं, तो उनके बीच में food के लिए competition होगा. There will be scarcity of food. There must be the competition for the shelter also. सबको अपने अपने places चाहिए रहने के लिए. So these are certain features which describe the tropical rainforest region on the earth. Now let's talk what kind of plants, what kind of animals, especially हम यहाँ पे animals के adaptation की बात कर रहे हैं. So what the animals found in this area? These are types of animals: monkeys, apes, gorillas, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, birds, insects, and many more. These are few examples of the animals which are found in this tropical rainforest region. Now students, as we discussed that in this area wide variety of plants and animals are found, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा competition भी हो रहा है for the food and shelter. That's why the animals which are living in this region, in this zone, tropical rainforest zone, they are adapted also according to their survival capacities. उनको कैसे survive करना है, how they can meet to their food and shelter requirements. वो अपनी food और shelter की requirements को कैसे fulfill कर सकते हैं. For these purposes, the animals found in this region are highly adapted. इनमें बहुत सारे adaptations देखने को मिलते हैं. So now let's talk about some of the examples of the animals and what kind of adaptations are found in those animals. आज की वीडियो में बात करते हैं adaptations found in monkeys. Students, in the tropical rainforest region, wide variety of monkeys are found. Monkeys की भी बहुत सारी species, अलग-अलग types यहाँ पे exist करते हैं. तो exist करने के लिए उनमें क्या-क्या features, क्या-क्या adaptations present हैं? The first one is they have long prehensile tails which help them to move from tree to tree. So generally these monkeys, they are found on the trees. Trees से generally वो भी जितने भी fruits वगैरह हैं, they used to eat them. उनको eat करते हैं, consume करते हैं. तो generally वो tree to tree jump करने के लिए what they use their long prehensile tail. इनकी जो tail होती है बहुत ही strong होती है, right? तो जैसे ही किसी branch के ऊपर पहुँचते हैं, they can easily wrap their prehensile tail, जो इनकी tail है उसको wrap कर लेते हैं to the branches of the trees and they can hang themselves easily. वो easily अपने आप को hang कर लेते हैं. Then they can swing from one branch to the branch of the other tree. वो easily वहाँ पे jump कर जाते हैं. The other adaptation found in these animals, that is in their hands and feet. So the hands and feet of these monkeys which are found in the tropical rainforest region, they are adapted in such a way that they can have a good grip on the branches of the trees. इनके जो hands हैं, feet हैं, उनकी help से easily branches को hold कर सकते हैं, उन पे grip बना सकते हैं, right? और swing करने में उनको help करता है. So in today's video, students, we learned about the tropical rainforest region. क्या होता है ये region? What kind of features are found in this region? क्या इसमें special characters present रहते हैं? And we also discussed about the adaptations found in the monkeys which are existing in the tropical rainforest region. So now you can take a quick screenshot of the screen. And in next video, we'll discuss some other animals found in the tropical rainforest regions and we'll learn the adaptations found in those animals. That's all for today. Thanks for watching.